दीप पाजळे तेजाने, दावी दिशा अंधाराला, नवा मार्ग नवविचार देई नवरचना समाजाला. Student, myself Shelke. Here today we are learning about a topic of work power energy, which is most important in the aspects of NEET or JEE exams through. So first of all, we have to look out the work. So what is the basic concept of the work? What is work? In general, we can say that the work is a physical activity that is done by the person. जैसे कोई भी है, कोई तो भी काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वर्क कर रहा है. लेकिन इन फिजिकल और इन फिजिक्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज क्वाइटली डिफरेंट. इफ समबडी, एक आप एग्जांपल कंसिडर करेंगे, जैसे आपके पास एक स्टूडेंट है, वो 1 घंटा बैठ के उसने पढ़ाई की है तो आप बोलेंगे उसने काम किया है. लेकिन इन फिजिक्स में हम उसको काम नहीं कहते हैं. तो इन फिजिक्स द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ वर्क इज दैट इट इज ए when a force exert on a body and that body will get displaced by some displacement, then it is said to be work done. So work done, it is a combination of applied force and the displacement of the body, that is called work done. If there is no displacement of a body, then we cannot say there is a work done. एक एग्जांपल देंगे, जैसे दीवार है, दीवार को कोई तो भी स्टूडेंट आधे घंटे से धक्का लगा रहा है, यानी फोर्स अप्लाइड कर रहा है, लेकिन वो दीवार जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगी. अब वो डिस्प्लेस नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे वर्क डन 0 हो गया. तो फिजिक्स में जब हम फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तब तक हम उसको वर्क डन नहीं कहेंगे. तो सिंपल डेफिनेशन इज वर्क, अगर मैंने बोलना है तो वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. Force and displacement. In a simple way, we can only say that the work done is a product of work and displacement. But why I will take the dot product? That is important. Why I will take the dot product? That I am going to explain to you. In case if I write the work done, work is equals to, it is an equation of force into displacement. But force and displacement both are the vector quantity. And now which displacement we have to consider? The displacement is always in the direction of force. What I am saying? Displacement is always in the direction of force. Then the product of force and displacement is said to be work done. So then here we consider one example. If I have some cart and I exert a force in this direction. This is the direction of force. Now this cart is displaced in a horizontal direction, that is the displacement S bar. What is this force? Force, this direction of force makes some angle with the displacement. That angle is represented by theta. Here you can say that, sir, there is no displacement of the body in the direction of force. Force and displacement making an angle theta with each other. Then how we can calculate the work done? Because the definition of work done is force, but what displacement we require? The displacement which is in the direction of force required. So that I here find out the component of force which is in the direction of the displacement. The force makes an angle theta with the displacement, then component of force along the displacement is become F cos theta. What is this? F cos theta. Then the equation of work done, that is equation of work done is become the force. Now the force which is in the direction of displacement is become a F cos theta, and into displacement, a displacement is denoted by S. So that here the angle between force and displacement is given by theta, but in equation we can get a cos of theta, cosine of theta. Hence the work done, it is represented by W and it is written as F bar dot of S bar. This is the exact definition of the work done. Means from this description, I could say that the work done is a product of force and displacement, but there must be a displacement in the direction of force. That is a equation F is equals to, work done is equals to F bar dot of S bar. Now here we discuss some cases. The work done.
One questions I would like to ask to you students. The work done is a scalar quantity, but still work done is positive, work done is negative, or work done is zero. Why it is so? That we are going to discuss in our next session. Now here we will get the equation of work done, that is a dot product of force and displacement. Here if I consider the magnitude of work done, that should we find out W is equals to Fs cos of theta, where I must say theta is angle between F bar, that is force, and S bar, that is displacement. Now here I consider case 1. Here we discuss the case 1. If theta is equals to 0, then look at this diagram. If theta is equals to 0, then the direction of force and direction of displacement is in the same direction. Theta is equals to 0 means I said F bar and S bar are in same direction. एक ही direction में दोनों रहेंगे, are in same direction. So then, and cos of theta, in equation there is a cos theta. Theta is equals to 0, then cos of theta equals to 1. That is the value of cos of 0. Cos of 0 equals to 1. So therefore work done is equals to, simply we can say that the product of force into displacement. This is the maximum work done and this is the positive. This is the maximum and ये positive भी work done है. Because why it is called as positive work done? Because it is a work done in the direction of force. सिंपल है, ये पेन है, ये पेन को अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये पेन इधर जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में अगर ये पेन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब है ये जो भी वर्क डन हमने पेन पे किया है वो पॉजिटिव वर्क डन है. इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन. इट इज सिंपली सेड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. केस 2. In case 2, if I consider theta is equals to 90 degree, what happened to 90 degree? देखो, if this is the body which is displaced in horizontal direction and I exert a force in upward direction, that is the angle between force and displacement, that would be equals to 90 degree. There is a no work done in the direction of force because force is vertical in direction, displacement is horizontal in direction. So that here we consider from this equation we can find out cos of theta is equals to 0, cos 90. The value of cos 90 is equals to 0. So therefore वर्क डन इज बिकम cos 90 की वैल्यू अगर 0 मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं तो आपको पता चलेगा कि वर्क डन की वैल्यू 0 आती है. यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है ड्यू टू दैट फोर्स. उस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है. जैसे देखो ग्रेविटेशन फोर्स आप सबको मालूम है, क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? हमेशा बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है. अगर मैं पेन फेंकता हूँ ऐसा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0 है. सिर्फ किसका वर्क डन रहेगा? जो फोर्स मैंने अप्लाइड किया है उसका वर्क डन रहेगा, क्योंकि वो फोर्स जो अप्लाइड किया है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में. लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन रहेगा वो यहाँ पे 0 रहेगा. That is the case of work done is 0. And in third case, we can say about a work done is negative. Why work done is negative? I am asking you a question. So why work done is negative? Actually, work done is a scalar quantity. Why it is called a scalar quantity? Because it is the dot product. Dot product of any two vector is always become a scalar. So that the work done is a scalar quantity, but still work has a positive value, 0 value, or negative value. So negative value it just represent that is a work done is opposite in the direction of force. You have to only keep in mind that work is negative. It means there is a work done but opposite in the direction of force. So you must have a one question, sir, what type of work done is said to be negative? If I take a ball and just throw in upward direction, then बॉल थ्रोड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइड ए फोर्स. वो फोर्स मैंने अप्लाइड किया, इसकी वजह से बॉल ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस है. तो ये जो बॉल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है. जब ये डिस्प्लेसमेंट बॉल के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पे जो वर्क डन रहेगा वो निगेटिव रहेगा. तो वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी, उसको जब भी मेजर करेंगे हम उसका वैल्यू लेंगे. लेकिन पॉजिटिव निगेटिव कहने के वक्त हम ये सोचना है सिर्फ कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है तो उसको हम निगेटिव वर्क डन की तरह लेंगे.
तो यहाँ पे अगर आपको केस देखना है तो अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो देन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो देन cos ऑफ 180 का वैल्यू जो है वो -1 आएगा। अगर यहाँ पे मैंने -1 वैल्यू रखा है इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन में अगर cos थीटा की जगह पे -1 रखा तो आपको यहाँ पे आएगा माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। हियर आर द सिंपलेस्ट केस ऑफ वर्क डन। तो here work done is affected by the inertial and non-inertial frame of references. Inertial frame means the frame which is or the space which having a constant velocity or its acceleration is 0, that is called as inertial frame of reference. In 11th class you, before that chapter you must know about inertial and non-inertial frame of references. So inertial frame of reference means the frame of reference or the space which having a constant velocity or 0 acceleration. But in non-inertial frame of reference, in non-inertial frame of reference, the space is moving with a change in velocity. There is an acceleration of that space or frame. Just like we discuss one example. जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन कौन सी स्पीड से नहीं जा रही है, स्पीड्स कम ज़्यादा होती रहती है, इसको वेलोसिटी हम बोलेंगे क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे ट्रेन के अंदर में डब्बे के अंदर कुछ तो भी बॉक्स है, उसको मैं पुश कर रहा हूँ, सामने की तरफ ढकलते लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो डब्बे पे वर्क डन होगा वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको दो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक जो मैंने अप्लाइड फोर्स किया है उसका डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा जो ट्रेन के वजह से हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे नॉन इनर्शियल के केस में वर्क डन में फर्क पड़ता है क्योंकि वहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट भी ऐड हो सकता है। So that is about it. Work done is also affected by inertial and non-inertial frame of reference. Again, one more thing, that is the displacement. The displacement vector can be found out if you will have the coordinate of 2 points. Just let someone example. If I said in a two coordinate system, that is x and y, I say there is a coordinate A having some coordinate 1, 2, and there is a point B having a coordinate something 3 and 4, and there is a displacement from A to B. Then this is the force exert on the AB from A to B. Force exert, that is the bar in the direction of AB, and displacement is A to B. Then we can find out the work done, that is the F bar dot of BA bar. So what is BA bar? Alright, not BA bar, I write here AB bar. The AB bar, what is AB bar? It is the displacement vector. Displacement vector can be calculated by, suppose I said x1, y1, and here I said coordinate x2, y2. So AB bar can be found out by x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. Like this, we can find out the AB bar, and by getting this, you can find out the work done. This is a work done due to the constant force exert on a body. The same work done we can find out by using a variable forces that we discuss later.